conversion of galvanometer into ammeter. Okay. सबसे पहले dear students, why do we do this conversion? Because sir, galvanometer is a device which can measure small amount of current. If I give it large current, what will happen, बच्चा लोग? It will burn out. It will burn out. As simple as that, sir. It will not be able to withstand that large amount of current, and eventually it will जो है burn out. Okay. So why do we require conversion का answer? You know. How do we convert it? That we are writing. We convert it by connecting a low value resistance. What do we call this low value resistance? We call this low value resistance as shunt in parallel with galvanometer coil. ठीक है? Now construction will go. This is my galvanometer का resistance, galvanometer का coil you can say. This is the low value resistance shunt, which is I'm connecting in parallel. This is the total current which is entering. Can I say this is a junction? जब भी जंक्शन की बात होगी जितना करंट आया है उतना करंट जाएगा. तो यहाँ से जो करंट जाएगा that will be IG. यहाँ से जो करंट जाएगा that will be IS. IS means what? Current through shunt. Again this current will add up together and it will become what? I only. Clear है? Labeling कर देते हैं. G, resistance of galvanometer. S मतलब shunt. I मतलब total current. I मतलब total current. Total current. IG will be your current through galvanometer. इसको बेटा एक और करंट बोलते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी बोलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट IS. समझ गए? करंट थ्रू शंट. परफेक्ट. ये स्टूडेंट शंट का रेजिस्टेंस लो होगा तो जब टोटल करंट आई आएगा तो उसमें से ज्यादा करंट किस में से पास हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर से या शंट से? Shunt. है ना? तो शंट इज बेसिकली लाइक अ हाईवे. अगर ट्रैफिक जाम हो जाएगी तो सारे से सारे लोग जो है वो एक लो रेजिस्टेंस का पाथ लेंगे, मतलब वो हाईवे से निकल जाएंगे और जो है वो अपना गैल्वेनोमीटर डैमेज से क्या हो जाएगा? बच जाएगा. बेसिकली इट इज अ बाईपास व्हिच वी आर क्रिएटिंग. If I categorize, I will be greater than IS and it will be greater than IG. I is always usually measured in ampere. IG is usually measured in milliampere. मतलब आप अपना रेंज बढ़ा दे रहे हैं. जो सिर्फ आप मिली एम्पियर में मेजर करते थे अब वो आप एम्पियर में मेजर करोगे. तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया वर्किंग. First let us find the value of shunt. But I can see that the galvanometer and shunt are connected in parallel. And since they are connected in parallel, the potential across galvanometer and the potential across shunt has to be equal. Hold on, let me connect it to my charger for a moment.
Let us proceed, dear students. Vg equal to Vs. So I can write Vg के जगह पे Igg is equal to Is into S. Perfect. Now, dear students, can I write S will be nothing but Igg upon Is. If you want to write this, you can write Igg upon I minus Ig. इतना भी लिखेंगे, that is more than enough. So you got the formula for what, dear students? You got the formula for shunt. Next, fraction of total current through galvanometer. Same approach, just Igg is equal to ISS. Children, can I say I is Ig plus Is? I hope you understand this equation. Yes. So can I write IS as I minus Ig into S? This will become Igg. If I open it up, this will become Si minus S Ig, Igg. This will go here, so Ig will common, G plus S. This will become Si. Let's interchange. इसको इधर बुला लो, इसको इधर लेके जाओ. तो Ig upon I is equal to S upon S plus G. This is the formula of fraction of total current going through galvanometer. Can I say I will always be greater than Ig? Correct? How much time it will be greater? N times, where N will be always greater than 1. And Ig जो छोटा सा करंट है, तो उससे ज्यादा ही रहेगा वो. Correct? So I can write Ig upon I is equal to S upon S plus G. Now instead of I, I'm going to write N times Ig. S upon S plus G. Ig will cancel. 1 upon N is equal to S upon S plus G. तो I can write S plus G will be equal to NS. बेटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये S को उधर ले लिया, तो NS minus S is equal to G. S will be taken as common, N minus 1 G. तो S will be G upon N minus 1. Which simply shows that, dear students, कि आप गैल्वेनोमीटर को कुछ वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका S का वैल्यू और कम हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाट यू वांट द वैल्यू ऑफ S टू बी मिनिमम, है ना, कम से कम रहे. Last part is fraction of total current flowing through this shunt. Fraction of total current flowing through shunt. Same approach, Vg equal to Vs. So Igg is equal to ISS. डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में IS, इसको देखो, ये स्टेप में मैंने IS को इन टर्म्स ऑफ IG लिखा था. अब मैं क्या करूंगा, मैं IG को इन टर्म्स ऑफ IS लिखूंगा. मतलब आई एम रिप्लेसिंग IG. इसको ओपन करूंगा, आई गेट द फॉर्मूला वेरी सिंपल. IS अपॉन S, IS अपॉन I will be equal to G अपॉन S plus G. बच्चा, यू डोंट हैव टू डिराइव दिस फॉर्मूला, आपको इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है. आई जस्ट गिव एक्सप्लेन योर शॉर्टकट. जहां पे G था वहां पे आपने क्या लिख दिया, S. जहां पे S था वहां पे क्या लिख दिया, G. जहां पे G था वहां पे क्या लिख दिया, S. जहां पे S था वहां पे क्या लिख दिया, G. अंडरस्टूड? Yes. कुछ लर्न नहीं करने का, एक ही फॉर्मूला, आई जी अपॉन आई इज इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस जी. बाकी में घुमा फिरा आप, बराबर है. सिंस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन जी. शंट का फंक्शन क्या बाईपास कर देता है ना, बाईपासेस एंड बाईपास क्रिएट करता है. ओके, प्रिवेंट्स फ्रॉम डैमेज, डैमेज से बचाता है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि सारा का सारा करंट खुद से पास करवा लेता है. डियर स्टूडेंट्स, रेंज बढ़ा देता है. आपका पहले मिली एम्पियर में मेजर हो रहा था, अब किसमें मेजर होगा,
एम्पियर में। सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है क्योंकि पैरेलल में, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आइडियली, ये एमसीक्यू में पूछते हैं, आइडियली एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, 0, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा